So do you all remember where we have done this polar form? Is it to complex number? Exactly, correct. So that we have done in complex number when we were doing. Okay, so what is it? So we know the Cartesian form, right? Cartesian form kya hota hai? X and y. So when we convert x and y in terms of r and theta, then r and theta is called as the polar form. So how can I convert x and y in terms of r and theta? Do you all remember any relation between them? X I can replace by r cos theta and y by r sin theta. If you all don't remember this, you all can visit to my YouTube channel and you all can refer those videos wherein I have explained in detail how do we get this x and y in terms of r and theta. There I had explained, you know, like we have this xy plane. Okay, this is my x-axis. This is my y-axis. Suppose this much distance is x and this much distance is y. So this point would be my P of x comma y. Then join this point from the origin. I'll get this. Okay. Then how much is this distance? The perpendicular distance on x-axis. How much is this distance? What is this distance, students? Equivalent to y. Correct. It's parallel to y-axis. No? So this is how much distance? This is y from the x-axis. So ये भी क्या होगा y, and this is x-axis. So I want x and y in terms of theta. So I suppose this distance we denoted by r. And you all remember that this distance is nothing but what? It is the modulus. If you all can recollect that, it was the formula x square plus y square. Okay. So what is cos theta? Cos theta is what? Adjacent upon the hypotenuse, right? So what is the adjacent to this angle theta? What is the adjacent side? X upon square root of x square plus y square. Correct, but that we have taken as r. So yes, this will be r. So what we get x as? X we get it as r times cos theta. Now you understood how do we get this? Yes, ma'am. So this I had explained already when we were doing complex numbers, when we were converting Cartesian form into polar form. Similarly, what is sine theta? Opposite side upon hypotenuse. So what is the opposite side? It is y upon r. So what will be y? We will get as r times sine theta. So this is what I have got, right? And x square plus y square will be r square. And also there's one more thing, no, dy dx is also there, so that we will replace by r times dr d theta. I hope these things are clear to all of you. So what are we going to do with this? We are going to convert our variable x and y into polar form, that is in terms of r and theta. Okay. Getting my point, kids? Sorry. So how does your double integral look like? It looks like this, no? You are given one function which is of two variable. Then you are given double integral which you have to integrate 2 times. So these are the limits. So this is called the innermost. This is called the outermost. We go from inside to outside. So first we integrate inside the integral with respect to inside integral, and then with respect to the outside integral. All right. So these are the limit of which variable? C of x, d of x. Ye limit kiska hai? When your inside integral limit is dependent on x, that means it is the limit of variable y. And then outside limit is the limit of variable x. Okay. So ये जो लिमिट दिया हुआ रहेगा वो किसका रहेगा? वेरिएबल y और x का. बट आपने y और x को किस में कन्वर्ट किया? r एंड थीटा में, राइट? नो, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको? r एंड थीटा के टर्म्स में. dy dx को किससे रिप्लेस करोगे आप? यू विल रिप्लेस इट बाय r टाइम्स dr d थीटा. तो जो हमें लिमिट भी चाहिए रहेगा वो किसका लिमिट चाहिए रहेगा? r का चाहिए रहेगा, राइट? बिकॉज हमारा जो dy dx हो गया वो क्या हो गया अभी? dr d थीटा हो गया. सो वी विल बी wanting, you know, the limits of variable r and theta. So how are we going to get that? How are we going to get that? Any idea to any one of you? So to get limits of r and theta, you need to draw the diagram of these things inside integral. जो limits दे रहेंगे ना, old limits, उनका आप diagram draw करोगे to get the limits of variable r and theta. Getting it or not, students? Can I get a response?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so what we are going to do, if you are given in the question that you change to polar coordinate, so what you are going to do, you are going to replace x and y with r cos theta and r sin theta respectively, and dy dx with r times dr d theta. तो ये तीन substitution बहुत important है. I'll just highlight with the yellow color. So ये substitution लोगे, ये substitution लोगे और ये substitution बहुत important है. Okay, तो ये तीनों चीज आपको याद रहनी चाहिए. That x you are going to replace it with r cos theta, y with r sin theta, and dy dx with r times dr d theta. So your variables x and y will get converted to r and theta. Then to get limits of variable r and theta, for that you need to draw the diagram. Diagram किसका draw करोगे? जो आपका given question में जो limits दिया रहेगा उसका आप क्या करोगे? Diagram draw करोगे to get the values of r and theta. All right. Have you all understood this? Now I will start with the question. So one question I'll be explaining it to you all, and then other one you all try to solve it by yourself. Yes or no, students? Will you all do it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We'll try. All right. So I'm starting with the first question now. Since this is the first question, so I'll take the easiest one, which you all can understand easily. So yeah. Question number 1. Change to polar coordinate and evaluate. So this is how your question are going to be asked this way. Change to polar coordinate and evaluate. Okay. So 0 to a, 0 to square root of a square minus y square. Okay. Shall we begin, students? Are you all ready? Yes, ma'am. So we'll go very slowly. Try to understand each and everything. In case you get stuck somewhere, you can stop and you can ask. So let us go to the step 1. Let us do step 1. So what is the step 1? So what is the question given to us? We have to change this to polar coordinate. Okay. So how can we do that? So जहां जहां पे भी x and y उनको replace करना है. So क्या करेंगे? पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? We are going to replace x with R cos theta. करेक्ट. x को रिप्लेस करेंगे r cos theta से, and y को R sin theta. R sin theta. करेक्ट. और dy dx को R d theta. करेक्ट. ठीक है. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू कि r क्या है, थीटा क्या है. राइट. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था. ये पॉइंट हुआ, ये जो डिस्टेंस है, हमेशा वी ड्रॉ स्ट्रिप लाइक दिस फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये जो होता है ये r रहता है. ओके. एंड दिस इज अ थीटा. So we are replacing x and y with r theta, and dy dx का हो जाएगा फिर r dr d theta हो जाएगा. तो ये जो हमारा फंक्शन है, देखते हैं वो क्या हो जाएगा. फिर फंक्शन हमारा क्या था? इट वाज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. राइट. हम माइनस कॉमन ले लेते तो व्हाट आई विल गेट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? R square. Yes, it is going to be r square. So ये हो जाएगा r square. Understood? Any doubt to anyone? Because everywhere you have to replace x and y with r and theta. So this was my function. So in this also you're going to replace x and y with r and theta. You getting my point? Any doubt till now? No, ma'am. No, ma'am. Okay, now moving ahead. So yeah, everything is being substituted now. So yeah, this is done, this is done, this is done. Now what is left now to get the limits for? Okay, therefore we get, so this will become square root of a square minus r square. This is your new function now, and dy dx will get replaced with r dr d theta. Now you want limit of r and limit of theta.
ओके, सो r का लिमिट क्या होगा और थीटा क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. फॉर दैट व्हाट यू विल डू? So I'll just make it equation number 1. For that, I need to go to step 2. Step 2 will be what? Tell me, how will I get the limit for r and theta? You'll have to draw a diagram. Diagram of whom? Straight, considering the equation, given equation. So we need to draw Yes, the ma'am. diagram of the limits. Which limit I'm talking about? Look at the Inside question. limit. Look at the question. Inside So limit, square root of a so square minus inside y integral. square. So ये limit किसका है? 0 to square root of a square minus y square. This is the limit of which variable? Y. Y का है. हाँ. dy. Since the limit contains y in it, मतलब limit क्या है? Dependent on y है, तो वो किसका limit होता है? x का limit होता है. किसका limit होता है वो? So this is the limit of variable x. Is this clear to all of you? So lower limit is Yes, 0 ma'am. and upper limit is what? Yes, ma'am. Square root of a square minus y square. So tell me x equals to 0 का diagram क्या होगा? x equals to 0 का diagram क्या होगा? x is 0 where? Origin पे. अच्छा, only on origin. Y-axis पे you take any point on y-axis, x coordinate will always be Yes, 0. ma'am. So Yes, x ma'am. equals to 0 का diagram क्या होगा? Y-axis. And x is equals to square root of ये जो upper limit हमें दिया हुआ है इसका diagram क्या होगा? So I cannot conclude because of the square root. Let us take the square on both the side. I'll get this. Take y square on this side. What I will get? X square plus y square is equals to a square. What is it? ये किसका equation का graph क्या होगा? Circle. Yes, circle center at Origin. correct. Center at origin and radius क्या है? A. Correct. Okay. Also, what is given to us? ये तो हो गया x का limit, y का limit क्या दिया है? Y का limit is from 0 to a. And limit of variable y is y equals to 0 to y equals to a. Okay. Y equals to 0 का क्या होता है? It is going to be a x axis and y equals to a क्या होगा हमारा? It is going to be a line parallel to x axis. Okay. Has everyone understood the limits? Till now, any doubt to anyone? Anyone wants to ask anything? Till now, everything is clear? Yes, ma'am. No doubts, ma'am. ठीक है. Okay. Now let us draw the diagram. सब limits को identify कर लिया आपने. Now we have to draw the diagram. So I would draw it over here. Okay. This is my y-axis. This is my x-axis. Okay. And this is my origin. Okay. Now the what was it? First lower limit was x equals to 0. X equals to 0 क्या होता है? It is going to be y-axis. So here is my x equals to 0 वाला this thing. Okay. Clear है? So on y-axis, my x coordinate will be 0. So इसलिए x equals to 0 क्या होगा? It is going to be a y-axis. Is this clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we need to draw the upper limit. Upper limit is what? X square plus y square equals to a square. तो कोई भी circle आप draw कैसे करते हो? कैसे explain किया था? How do we draw a circle? First, what do we plot? Ma'am, you have to find x and y. We don't need to find x and y. Look at the for drawing a circle. What all things you need, Basil? We'll You have need, to we draw a have the, circle. now we have the origin. And we'll need to Origin get and the radius. radius. You already have Radius is radius A. and A. yes. So So we'll these are mark already A. available with you. Yeah.
So I'll plot the origin. Origin is over here and radius is what? A. So how much distance I'm going to travel on all the sides? Left side, right side, bottom side, up side. How much distance I'm going to travel from the origin? A. 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 So right side would be A. Left side would be minus A. A. Up side would be A. and downside. Minus A. Correct. Okay, चारों dots अभी connect करो and you're going to get a circle. This is how you draw the circle. Center and then radius. Is this clear to all of you? So I'll just write down the equation of a circle also. What is it? It is x square plus y square is equals to a square. Clear है आप सभी को? Yes, ma'am. तो हमारा जो डायग्राम है, हमारा जो लिमिट था, it was from y axis to this circle. So y axis to the circle. Okay, ठीक है. दूसरा लिमिट क्या है? And the limit of variable y is y equals to 0 to y equals to a. तो y equals to 0 किधर आएगा? X axis पे. Correct. ये हो गया y equals to 0 and y equals to a. It is going to be a, कहाँ आएगा y equals to a बताओ? ये होगा कि नहीं? Yes, ma'am. Is it y equals to a वाला line? Yes. So Yes, this is your y equals to a. So ये line पे क्या रहेगा? Y का वैल्यू फिक्स रहेगा, x का वैल्यू रहेगा, तो it is a line parallel to x. अब बताओ common region क्या होगा? Where would be my common region? Where is my common region? Is it going to be this? Or this? Or this? Where it is going to be? Which quadrant my common region will lie? Since that line is in first and is it both first and second quadrant only? First and second quadrant only. Because of the line y is equal to a. See, if you say y equals to 0 to y equals to a. If you say y equals to 0 to y equals to a, then obviously first and two. But look at the limit of variable x also, na? Okay, Limit of variable x so we क्या are है? It considering is lower positive. So limit it's is lower limit of x is what? 0. तो 0 से नीचे नहीं जाएगा. Getting my point, Basil? X is equals to 0 Yes, is the ma'am. lowest limit for x. so it x से will be in नीचे नहीं positive जाएगा. side. So yes, the region will be only this region. Got it, Basil? Yes, other Yes, ma'am. students, what about you guys? क्यों सेकंड क्वाड्रेंट Yes, क्यों नहीं ma'am. आया? कौन बता सकता है रीजन? बिकॉज लोअर लिमिट क्या है x का? 0 है, तो मतलब 0 से नीचे नहीं जाएगा. इधर x का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मतलब वो उसका लोएस्ट लिमिट ही 0 है, तो 0 से नीचे और नहीं जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ओके, सो डायग्राम ड्रॉ कर लिया, रीजन भी हाईलाइट कर लिया. नाउ लेट अस फाइंड आउट द लिमिट. सो आई विल जस्ट राइट डाउन माय फंक्शन. व्हाट वाज इट? इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ a square minus r square r dr d theta. Okay, now r और theta का लिमिट चाहिए. Before me telling you, ये इधर तो r का लिमिट आएगा ना, इधर तो r का लिमिट आएगा, right? Here it is going to be limit of variable r. But before that theta का लिमिट निकालते हैं. बताओ पूरे कॉमन रीजन में जरा देखो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है. एंगल थीटा मतलब क्या? एंगल. पूरे कॉमन रीजन में थीटा कहाँ से कहाँ वेरी होते हुए दिख रहा है? A से A तक. एंगल क्या होता है? एंगल 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 90 degree. ऐसा होता है. ए क्या होता है? लोएस्ट रीजन क्या है? 0 है. लोएस्ट एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है. और मैक्सिमम एंगल कितना बन रहा है? 90. यस. तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है? इट That इज is वेरिंग फ्रॉम 0 to theta to 0 to 9 by pi by 2. करेक्ट. ओके, अगर वही मैं आपको, अगर मेरे पास ऐसा डायग्राम आता जिसमें मेरा कॉमन रीजन कुछ इस तरीके से होता, तो इसमें आप बता सकते थे कि थीटा कितना हो रहा है? एग्जैक्टली एट द सेंटर है, तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा. 45 मतलब पाई बाय 4. गेटिंग माय पॉइंट? सो कॉमन रीजन में यू हैव टू सी कि आपका जो एंगल है वो कितना बन रहा है, लोएस्ट कितना होगा और मैक्सिमम कितना हो रहा है. ओके, Yes, ma'am. नाउ वी नीड टू सी द
वैल्यू ऑफ आर आर के लिए क्या बताया था मैंने कि यू शुड ड्रॉ स्ट्रिप फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ड्रॉ कर दिया। अब वो स्ट्रिप का जो मैंने स्ट्रिप ड्रॉ किया है कॉमन रीजन में, उसका स्टार्टिंग एंड किधर है? जो स्ट्रिप ड्रॉ किया है कॉमन रीजन में, उसका स्टार्टिंग एंड किधर है? ओरिजिन पे है कि नहीं? Yes, ma'am. Starting from origin करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? and जीरो हो the जाएगा लोग। radius is a. और रेडियस हो जाएगा ए, तो ये जीरो हो गया। और अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट क्या है? सर्कल को टच कर रहा है। सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है? इट इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया, तो आर कितना हो जाएगा? ए। सो अपर लिमिट कितना हो जाएगा? ये इट इज गोइंग टू बी माय ए। समझ में आया आप सभी को कैसे लिमिट निकाला हमने? Yes, Has ma'am. everyone understood this? Yes, ma'am. So don't worry, I'll give you one more question. So uska आप try to find the limits by yourself and see whether you are able to get it or not. So before we proceed to the next question, evaluate it. Now इसको evaluate कैसे करोगे? How are you going to evaluate? Are you going to apply U into V rule? Is it going to help us? So because both the functions are algebraic, okay, both the functions are not different, they are same. Okay, so U into V rule तो नहीं लगा सकते हो। So क्या करोगे? Say what you will do. So what I will do, I will put this bracket में जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको मैं ले लेती हूँ t. Substitution method. Yes, t ले लेते हैं ना। You will say कि why ma'am you took it as t? Because of this r. Why? Because जब मैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन उसको t लेती हूँ, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, what I will get? a square is constant, डेरिवेटिव will be 0, r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2r, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा? dt by dr। ना ये r dr एक साथ में है, तो उसको हम ये dr इधर लेके जाएंगे, -2 उधर लेकर आएंगे, तो r इंटू dr क्या हो जाएगा? -dt/2। ना यू गॉट इट? समझ में आया अभी क्यों सब्स्टिट्यूशन लिया? Yes, ma'am. ना अभी सब्स्टिट्यूशन तो इसका काम और इसका काम हो गया। अब ये लिमिट भी आपको क्या होगा? चेंज होगा, बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो जो भी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो उसका लिमिट भी क्या होता है? चेंज होता है। सो ये लिमिट जो था वो किसका था? r का था। हमको t का लिमिट चाहिए। सो व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? t हमने क्या लिया हुआ है? a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो जब r का वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट 0, तो t क्या हो जाएगा? पुट करो इधर a स्क्वायर माइनस 0, तो कितना होता है? a स्क्वायर आता है। और अपर लिमिट कितना है? a। सो व्हेन r इज इक्वल्स टू a, तो t क्या हो जाएगा? t क्या था? a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। r की जगह पे a रखो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना होता है? 0। सो लोअर लिमिट क्या था? 0 टू a, t का वैल्यू क्या मिलता है? a स्क्वायर टू a स्क्वायर टू 0। तो सारे सब्स्टिट्यूशन अभी इधर पुट करो, पुट इट ओवर हियर, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। So from start, so outside integral will be as it is. अब बताओ लिमिट क्या लिखूं मैं? What should I write down the limit? लिमिट क्या मिला हमें? नया लिमिट क्या मिला? 0 to a square inside. 0 टू a स्क्वायर लिखूं कि a स्क्वायर टू 0 आएगा? जब r का वैल्यू 0 था, लोअर लिमिट के लिए क्या मिल रहा है? a स्क्वायर मिल रहा है। A समझो square to जरा, 0. A square to तो ये 0. जाएगा a स्क्वायर टू 0 जाएगा। वी नो वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कि अगर माइनस रहता है, ये माइनस को हटाना है, तो इंटीग्रल का लिमिट क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है और माइनस हट जाता है। 1/2 वाज कांस्टेंट टेकन आउट, ये माइनस कहाँ चला गया? इसमें अप्लाई किया, लिमिट इंटरचेंज कर दिया। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, दैट माइनस ऑफ इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx क्या होता है? इंटीग्रल फ्रॉम b टू a। माइनस हट जाता है और लिमिट्स क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, अभी इजी है कि नहीं इंटीग्रेट करना? t रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है? t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट इज फ्रॉम दिस टू दिस। 3/2 इज कांस्टेंट, बाहर रखो, 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। एंड पुट द लिमिट इन प्लेस ऑफ t। तो ये क्या है? a स्क्वायर
t के जगह पे आया, उसका पावर कितना 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो 2 and 2 will get cancel, 1/3 आता है, 0 to pi/2, इधर क्या बचा, 2 and 2 will get cancel, a⁻³ बचा, a⁻³ is again constant, बाहर आएगा और बचा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 to pi/2 हो गया। now put the limit, upper limit minus lower limit, the final answer is pi into a³/6। सभी को समझा क्या ये क्वेश्चन? Has everyone understood this problem? Now I'll Last, be give, मैम लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन था where you got confused? मैम। ये जो इंटीग्रेट किया आपने यहाँ से So, t⁻³ के बाद जो स्टेप किया ना वो what you have not understood? It is just a basic mathematical thing. Now t⁻³ upon 3/2 आया, 3/2 will go outside, 3/2 ये नीचे 3/2 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा कि नहीं, वही लिखा है इधर Yes, ma'am. 2/3। so this is what I have written, मैम 2/3 हो जाएगा। a-0 ऊपर से आया जो t का ये सब्स्टिट्यूट किए थे। अपर लिमिट पुट किया t के जगह पे, t के जगह पे क्या लिखेंगे, a², और ओके उसका मैम। पावर 3/2 will be as it is, लोअर लिमिट इज 0 तो 0 आ गया, देन कैंसिल होंगे, a³ बचेगा, a³ इज आल्सो अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, तो 1 बचेगा, अंदर 1 का इंटीग्रेशन थीटा आएगा, बस। अंडरस्टूड नाउ? यस मैम। Okay, now I'm giving you another question, try to do it on your own, so that one is also easy if you all try it on your own. Again change to polar coordinate and evaluate, okay? Very easy question. Come on, try this out. Giving you all 5 minutes, okay? So you all should try it on your own. Will you all do it? So you're putting in place of x r cos theta. That's correct. The whole cube. This is what you're going to get in the numerator. Is this correct? Yes, ma'am. यस मैम। dr d और नीचे theta r, और नीचे r, Under root actually r gets square. cancelled. तो r That ही is what आएगा I'm asking. No, that is what I'm asking. After simplification, what you will get? सिर्फ r This आएगा and this नीचे। will get cancelled. So you will be left with r square into cos cube theta. Understood? यस मैम। Ma'am, what about this? So if there is r dr d theta, then it will be r cube cos cube theta in conclusion, since dy dx is equal to r dr d theta. Yes, dy dx will be r times d theta. So it is r dr d theta. Okay. Now you want limit of variable r and theta. For that you need to draw the diagram. Did you all draw it? Tell me, this is the limit of which variable? Zero to x. Inside integral limit is limit of which variable? y। Yes, it is the limit of variable y. So y equals to 0 to y is equals to x. So what will be the diagram of y is equals to 0? It is x-axis, right? And y is equals to x will be a line parallel to, line passing through origin. Is this correct? So y is equals to x, it is going to be a straight line passing through origin. Okay, and what is this? Here, what 0 to 8 is the limit of which variable? And the limit of x is equals to 0 to x is equals to 8. Now you simply have to draw the diagram. How many of you draw it? Any confusion to anyone?
What happened? Where you got stuck? I mean, I was confused with the equation when after solving that equation, and I may do something wrong. I doubt. With this Where relate, I may end up in. Ma'am, I didn't draw yet, but I understand that I would end up with x is equal to r cos theta for drawing the diagram. you don't have to draw the diagram of x is equals to r cos theta. Come on, Basil. What did I tell you? You have to draw the diagram of which thing? You have to draw the diagram of the limits. Limits. Why? It is so simple. Why you make yourself, so confused? Do we need no need of substitution then? You don't have to bother about substitution. What did I tell you that you have to draw the diagram of the limits? Why are you focusing on x is equals to r cos theta and all? Basil, tell me. What did I tell you? You have to draw the diagram of which thing? The given limits. Yes, you have to draw the limits. So where the hell from, where the hell is coming x is equals to r cos theta? It is just a substitution that that you have to substitute in place of x and y. That's all. Okay, now you with the help of the given limits, ये limits का भी तो कोई रोल होगा ना? अभी एक तो सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया, ये लिमिट का भी कोई रोल है, उसको यूज करना है for drawing the diagram to get the limits of r and theta. So I wrote the limits of variable y, which is 0 to x, which is a x-axis and the line passing through origin. So this is a lower limit, y equals to 0. Y equals to 0 का diagram क्या होगा? It is going to be x-axis. Where is your x-axis? This is. तो ये हो गया आपका y equals to 0. Then you are having y is equals to x, which is your upper limit. So इसका diagram क्या होगा? It will be a line passing through origin. So this is your y is equals to x. Till now y equals to 0. ये lower limit है. This is your lower limit and this is your upper limit. तो अभी तक region ये मिला है हमें. Then हमें x equals to 0 to x is equals to a. तो x equals to 0 क्या होगा हमारा y axis? X equals to 0 and x equals to a. So suppose somewhere over here is what my a. So this will be a line parallel to y axis. Got it, everyone? Any query, any doubt to anyone? So common region क्या मिलेगा हमें? No, ma'am. So this is going to be my Ma'am, वो common region. arrow वाला. Triangle. Okay, this triangle is going to be my common region. Now ये in whole this triangle, अब बताओ कि एंगल क्या बन रहा है? हमें लिमिट चाहिए रहता है ना? लिमिट चाहिए रहता है हमें. तो ये हमारा फंक्शन मिला, r dr d थीटा हो गया. नाउ r और थीटा का लिमिट चाहिए, तो पहले हम थीटा का लिमिट निकालते हैं. थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है? लुक एट दिस. ये पूरे कॉमन रीजन में थीटा कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है? लोअर लिमिट तो पक्का पता चलेगा कि इट इज 0. अपर लिमिट कितना होगा? y इज इक्वल्स टू x है, तो यहाँ से हमें थीटा पता चल जाएगा. y क्या होता है? r sin थीटा. cos क्या x क्या होता है? r cos थीटा. r एंड r कैंसिल, cos थीटा इधर लेकर आओ. sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. tan थीटा 1. तो थीटा क्या होगा? फॉर विच एंगल tan थीटा इज 1? पाई बाय 4. सो अपर लिमिट क्या हो गया? पाई बाय 4. गॉट इट? ये एंगल कैसा आया? Yes, ma'am. So it is going to be from 0 to pi by 4. Now to get the limit of r, what did I tell you? To draw the strip from the origin. तो so starting end 0 पे, तो 0 हो गया. एंडिंग एंड किस पे है? ये लाइन पे x is equals to a पे. तो यहाँ से हमको r मिल जाएगा. सो r cos थीटा is equals to a. सो हमें r चाहिए तो cos थीटा को उधर लेके जाएंगे. a अपॉन cos थीटा हो गया. 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा हो गया. सो अपर लिमिट हमें क्या मिलता है? a इंटू sec थीटा. समझ में आया? अंडरस्टूड किड्स? मैम बोलो. मैम वो हम लोग को एरो कैसे समझेगा कि हम लोग को पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाना है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस? कौन सा डायग्राम नहीं समझा? ये x इक्वल्स टू a, ठीक है. x इक्वल्स टू a का डायग्राम क्या होगा? x इक्वल्स टू a का डायग्राम क्या होगा? इट इज अ लाइन. अब नहीं मैम, वो समझा. जो हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट नया फाइंड करते हैं ना, नया वाला. हाँ. उसके लिए हम लोग लाइन बनाते हैं ना, उस लाइन की स्टार्टिंग और एंडिंग जिसको टच करेगी वो हमेशा होता है ओरिजिन से ड्रॉ करने का, हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ करने का, वो भी कॉमन रीजन में. ड्रॉ इट फ्रॉम द ओरिजिन.
in the common region. Okay, ma'am. And then you check कि उसका starting end किधर हो रहा है common region में और ending end किधर हो रहा है, ठीक है? मैम बट हम लोग को समझेगा कैसा, मतलब एक्स एक्सिस पे लेके जाना है या वाई एक्सिस पे, वो कंफ्यूजन है. ऐसे ही ड्रॉ करना है. लाइक आई डिडंट गेट यू डाउट. लाइक जैसे अगर सपोज ये ऐसा कॉमन रीजन आता है मेरा, ठीक है, ये एक एग्जांपल, ठीक है, Yes, सपोज ma'am. कॉमन रीजन मेरा ये है. सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस. ऐसे ही ड्रॉ करोगे. हम अभी मैंने आपको बताया था ना हमारा रेडियस ओरिजिन क्या से ड्रॉ होता है. करना है. यस, यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस फ्रॉम द ओरिजिन. सो बट कॉमन रीजन तो हमारा Okay, ये ma'am. है, तो ये जहाँ पे ये पहले टच करेगा वो लोअर लिमिट होगा, जहाँ से बाहर निकलेगा वो अपर लिमिट होगा. ये भी एक क्वेश्चन लेंगे हम, नोट, डोंट वरी, ठीक है. So ये क्या होता है 0 to pi by 4. Now this is left on you to integrate. Now so many questions we have taken on the integration, so you should be able to do this now. Okay, will all be able to integrate it? Ma'am, is So R take this as cube. a, sorry, Ma'am, is R cube, not R to the power 4. correct. Yes, RQ. Okay, yeah. So with this I conclude for the day. Thank you so much.